So now children, we are going to start here with the next part. Kindly pay attention. So here you are being told, the policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. So the writer tells you that this policy of apartheid, this policy of discrimination created a deep and lasting means something that is not going to end up very soon, something that is not going to be eliminated soon, that is called lasting. कि कोई भी चीज जो काफी लंबे टाइम तक चले, जो जल्दी समाप्त ना हो, that is called lasting. So the policy of apartheid, the policy of discrimination created a deep and lasting wound in my country. So that is what the writer tells you here, that this policy of discrimination had created a very deep wound in the country and in the people, that the people were also deeply wounded, the entire country was deeply wounded. कि ये जो अपार्थेड की पॉलिसी थी, इसने काफी गहरे और काफी लंबे समय तक चलने वाले जख्म, वुंड मींस स्कैर और जख्म, कि इस तरीके के काफी लंबे समय तक चलने वाले जख्म हमारी कंट्री और हमारे लोगों को दिए. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. So here the writer says that all of us means the entire Africans, all the natives of Africa will spend many years, that their many years, their long period of time is going to be spent, if not generations, that if they are not going to take generations, definitely they are going to take at least years in recovering from that profound hurt, in recovering from that deep hurt. Profound means deep. कि वो कह रहे हैं कि ये जो जख्म हमें मिले अपार्थेड के दौरान, डिस्क्रिमिनेशन के दौरान, ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये जो जख्म हमें मिले, इनसे रिकवर करने में अगर हमें जनरेशंस नहीं लगेंगी तो भी कम से कम ईयर्स तो लगेंगे ही. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, कि हम लोग जो है वो बहुत सारी ईयर्स, बहुत सारे साल बिता देंगे, इफ नॉट जनरेशंस, अगर जनरेशंस नहीं भी तो बहुत सारे साल तो हम बिता ही देंगे, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. ये जो प्रोफाउंड मींस डीप, ये जो गहरा हर्ट, ये जो गहरी चोट है, इससे उबरने में हम कई साल तो लगा ही देंगे. सो दैट इज व्हाट ही मींस टू से दैट द पीपल ऑफ अफ्रीका आर रियली गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम ओवरकमिंग those wounds that had been given to them by the British government. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. So here the writer says that these decades of oppression, these long periods of oppression and the brutality means cruelty, that the people of Africa encountered definitely produced some unintended effect. Definitely it produced some such effect that was not intended, that was never thought. कि वो कह रहे हैं कि ये जो लंबे decade period of 10 years is called a decade. तो इस तरीके से कई डेकेड्स उन्होंने ये ऑपरेशन झेला और ये ब्रूटैलिटी, ये क्रूएलिटी झेली, लेकिन इसका एक अनइंटेंडेड इफेक्ट भी हुआ, इसका एक अनचाहा इफेक्ट भी हुआ. अनचाहा मतलब कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी वैसा एक इफेक्ट हुआ. तो ये कौन सा इफेक्ट था? एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बूज, द वाल्टर सिसिलिस, द चीफ लिथेलियस, द यूसुफ डेड्यूज, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुकवेज of our time. So that is what the writer is telling you here, that the unintended effect of this brutality, the unintended effect, the non-desired, from the perspective of the Britishers, the unintended or the non-desired effect was that it had produced the Oliver Tambu's, the Walter Sisulu's, the Chief Luthilius, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subukways of their time. Means on account of this brutality, on account of this cruelty, these kind of leaders had been produced in South Africa. Can you pay attention? And who these leaders were? Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthili, Yusuf Dadus. इनको Luthilius लिखा हुआ है, इनको लुथिली भी बोलते हैं. यूसुफ डैडू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सुबुकवे, इस तरीके के लीडर साउथ अफ्रीका की सॉइल में पैदा हुए. तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि ये जो ब्रूटैलिटी, ये जो अनकाइंडनेस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिखाई, इस अनकाइंडनेस का नतीजा क्या हुआ कि इससे इस तरीके के लीडर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए. अब इसमें आपको यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन भी दिया गया है अलग अलग लीडर्स का कि किसने क्या किया. इसको अभी आप पढ़ करके और इसको ये समझ सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपनी कंट्री की हेल्प की. तो बच्चों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है देखने वाली, वो ये कहा जा रहा है कि ये जो डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन थे, ये जो ब्रूटैलिटी का जो ये पीरियड था, इसने एक अनइंटेंडेड इफेक्ट भी प्रोड्यूस किया. और वो क्या था कि ऑन अकाउंट ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन, दिस काइंड ऑफ लीडर्स हैड बीन प्रोड्यूस्ड ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल. सो हियर यू हैव
you can see that their names have been written in plural and article the has been added to their names. So actually this is a way of making a common noun out of a proper noun. ये क्या होता है कि जब हमें किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन की जब हमें ये कहना होता है कि इस तरीके के लोग, तो दी ओलिवर टेम्बूज मीन्स पीपल लाइक ओलिवर टेम्बूज, Walter Sicilius means people like Walter Sicily. The chief Luthilus means people like the chief Luthili. The Yusuf Dadus means people like Yusuf Dadu. Bram Fisher means people. The Bram Fishers means people like Bram Fisher. The Robert Sobukwe's means people like Robert Sobukwe of their time. कि जब हमें जो है किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कन्वर्ट करना होता है तो हम इस तरीके से उन पे द लगा करके और उनको प्लूरल में लिखते हैं. उसका मतलब होता है उस तरीके के लोग, लाइक द न्यूटन्स ऑफ अवर कंट्री मीन्स कि हमारी कंट्री के न्यूटन जैसे लोग. तो दिस इज अ point of grammar and that is going to be explained separately also, but I hope you would have been able to understand कि ये इनके नेम प्लूरल में लिखे हुए हैं और उसके पहले द लगा है, तो इसका मतलब है कि इस प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कन्वर्ट किया गया है और इसका मतलब है कि इस तरीके के लोग. द ब्रैम फिशर्स मीन्स ब्रैम फिशर के तरीके के लोग, people of the type of Bram Fisher. The Robert Sobukwe's means people like Robert Sobukwe, Robert Sobukwe जैसे लोग. तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन भी दिया गया है. ये कौन है? ओलिवर टैम्बू. ये कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ही वाज वंस द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यू कैन सी. देन वाल्टर सिसलू, ही वाज अ पर्सन हु वाज गिवन 6 year imprisonment in South Africa. Then Chief Luthuli, Chief Luthuli was the only Nobel Peace Prize winner of South Africa. Then Yusuf Dadu, ही वॉज एक्साइल टू लंडन. इनको लंदन एक्साइल कर दिया गया था, देश निकाला दे दिया गया था. और कार्ल मार्क्स जो कि एक साइंटिस्ट और फिलोसफर थे, उनकी ग्रेव के बगल में इनकी भी ग्रेव है लंदन में. ब्रैम फिशर, ये एक लॉयर थे जिन्होंने नेल्सन मंडेला को डिफेंड किया था कोर्ट में. बाद में इनको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया था और ये कैंसर से इनकी डेथ हुई. फिर रॉबर्ट सुबुकवे, ये पैन अफ्रीकन कांग्रेस एक पार्टी थी, पैन अफ्रीकन कांग्रेस, उसके प्रेसिडेंट थे और इनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना डरती थी कि इनके नाम पर एक सुबुकवे क्लॉज, एक सुबुकवे लॉ बना दिया गया था. सो दैट इज व्हाट यू हैव बीन टोल्ड अप टू नाउ. So children, from now we are going to move to the next part. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. So here Nelson Mandela says that men of such extraordinary courage, that such courageous people, people of such wisdom means so wise people and so generous people, people of that kind of a generosity, they are really remarkable and their likes may never be known again, that these kind of people are never going to be produced again. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, कि ऐसे असीमित करेज वाले लोग, ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजडम वाले लोग, ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेनरोसिटी वाले लोग, ये वो लोग हैं कि जिनके तरह के लोग अब दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे. Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character. So here he says that probably it requires such depth of oppression, that extreme oppression, extreme torture is required to create such heights of character, that when the torture reaches to the maximum, the great characters unfold. Like when the Britishers had started creating the policy of oppression, when they had started implementing upon the policy of oppression in our country, the characters like Mahatma Gandhi had been produced, the characters like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose had been produced. So just in the same way, when the oppression was at its height in South Africa, the characters like Nelson Mandela and all these other characters, Sobukwe and all these people whom you studied previously, they had been produced. तो यहाँ पे वो यही बात कह रहे हैं कि शायद ऐसे कैरेक्टर की हाइट को प्रोड्यूस करने के लिए डीपेस्ट ऑपरेशन की जरूरत होती है, कि शायद ये जो डीपेस्ट ऑपरेशन था, ये शायद ये जो अधिकतम सताया जाना था, इसी की वजह से ऐसी हाइट वाले लोग पैदा हुए. सो माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई beneath its soil. So here Nelson Mandela says that his country is rich in terms of minerals and resources, in terms of gems, in terms of the resources that are found beneath the soil. But I have always known that the greatest wealth is its people. But he says that the greatest wealth of a country are the people.
finer and truer than the purest diamonds. And these people are really finer and truer than the purest of diamonds. कि वो कह रहे हैं कि हमारी कंट्री रिच है मिनरल्स में और जेम्स में जो कि यहाँ की सॉइल में यहाँ की धरती में मौजूद हैं. बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कंट्री की जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो यहाँ के लोग हैं जो फाइनर हो सकते हैं, ट्रूअर हो सकते हैं, प्योरेस्ट डायमंड से भी ज्यादा. तो दैट इज व्हाट नेल्सन मंडेला सेज हियर, एंड ही इज रियली नॉट बोस्टफुल, ही इज जस्ट मेकिंग अ राइट acclamation of the people of South Africa. And he says that definitely his country is rich in terms of minerals and resources, but the greatest wealth of a country are the people who are always going to be truer and finer than the purest of diamonds. So kindly pay attention, children. So now we are going to start here with the next paragraph. Kindly pay attention. So what Nelson Mandela says here, it is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. So Nelson Mandela says here that it is from these comrades, it is from these friends. Comrades means friends, companions. That it is from these companions in the struggle that I learned the meaning of courage. So what he wants to say here, that he learned the meaning of courage. He learned the meaning of daring from these comrades, from these companions whom you have already seen in the pictures. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. So here he says, time and again I have seen men and women. He says that the men and women from South Africa have often risked and gave up their lives for an idea. And what that idea was? That idea was the idea of the freedom of the country. तो वो क्या कहते हैं कि it is from these comrades, कि ये जो comrades हैं, ये जो हमारे साथी हैं, इनसे हमने struggle के दौरान करेज की, हिम्मत की मीनिंग को सीखा. और टाइम एंड अगेन ये देखा गया, जब तक ये देखा गया कि ये वो मेन और विमेन हैं कि जो अपनी लाइफ को रिस्क करते हैं और अपनी जिंदगियां दे भी देते हैं एक आइडिया के लिए, एक किसी सिद्धांत के लिए. आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. सो ही सेज दैट ही हैज सीन मेन stand up to attacks and torture without breaking. What he wants to say, that the people of South Africa have stood up to attacks and tortures without breaking. That they faced attacks and tortures, they were attacked, they were tortured by the Britishers, but they were not broken down, they were not broken, they did not surrender. कि वो कह रहे हैं कि मैंने देखा है कि लोग किस तरीके से अटैक्स और टॉर्चर के सामने सीना तान करके खड़े हो गए, और चाहे जितना भी अटैक हुआ, चाहे जितना भी टॉर्चर हुआ, लेकिन ये टूटे नहीं. शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, that they showed a kind of strength, they showed a kind of stamina and resilience. Resilience means the ability to deal with hardship, that is resilience, कि कष्ट को सहने की शक्ति. तो उन्होंने एक तरीके का resilience शो किया, that defies means challenges, that defies imagination, means the tortures were extreme. And these people, the South African people, had shown that kind of a resilience, they had shown that kind of a courage that can defy, that can challenge even the imagination, that even in your imagination you would not be able to understand that situation कि किस तरीके के घोर कष्ट इन्होंने सहे. I learned that courage was not the absence of fear. So here Nelson Mandela says that courage is never the absence of fear. It does not mean that the courageous people are not going to be afraid, but triumph over it. But courage means a triumph over fear. That means a victory over fear. Triumph means victory. The pronunciation of this word is triumph. That means victory. तो वो कहते हैं कि courage का मतलब, हिम्मत का मतलब डर का absence, डर की समाप्ति नहीं होता, बल्कि उस डर को जीतना होता है. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. So he says that the brave man is the one who conquers his fear, कि जो अपने डर को जीत ले. वो ऐसा नहीं है कि उसे डर नहीं लगता है, लेकिन वो अपने डर को जीतता है. So now let us begin from the next paragraph. Here Nelson Mandela says, no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. So what he says here, that nobody generates any hatred with another person since his birth. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. That this kind of a hatred we learn in the world, that this is a kind of instinct that we generate in the world, कि कोई पैदाइश से ही किसी से नफरत नहीं करता है, कोई किसी से हेट नहीं करता है
अपने जन्म से ही किसी के कलर की बेसिस पे, किसी के स्किन की बेसिस पे, किसी के बैकग्राउंड की बेसिस पे या किसी की रिलीजन की बेसिस पे, दीज आर द फीलिंग्स दैट वी जनरेट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ऑन अकाउंट ऑफ अवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, दैट एज वी कीप रिसीविंग द नेगेटिव perceptions from the world, we keep generating this feeling of hatred, and sometimes it is going to be on the basis of skin, sometimes it is going to be on the basis of background, sometimes it is going to be on the basis of religion, but this is not anything that one has got right from his birth. That means we learn these kind of feelings with the passage of time as we grow up, कि हम इस तरीके की नफरत की भावना को जैसे जैसे बड़े होते हैं इस संसार से ही सीखते हैं. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. So this is a kind of positivity that Nelson Mandela has been generating here. What he wants to say, that if people can be made to learn to hate, कि अगर हम लोगों को नफरत करना सिखा सकते हैं तो हम लोगों को प्रेम करना भी सिखा सकते हैं. If they can learn to hate, they can be taught to love. तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. For love comes more naturally to the human heart than its opposite, because love, the feeling of love comes to the human heart more naturally than its opposite, that is hate. So what Nelson Mandela wants to say here, that if people can be made to hate, they can also be made to learn to love, because love is a feeling that comes more naturally than its antonym, कि जो प्रेम की भावना है वो अपने विरोधाभास यानी कि नफरत की भावना से ज़्यादा नेचुरली लोगों के दिल में आती है. Even in the grimmest times, grimmest means the most difficult times, even in the grimmest times, in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, so when they were in prison and when they were just suffering from their grimmest time, कि जब वो जेलों में थे और जब वो अपना सबसे बुरा समय व्यतीत कर रहे थे, जब उन्हें और उनके कॉमरेड्स, उनके साथियों को उनकी लिमिट्स तक पुश किया गया, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. So sometimes it was so that there was a glimmer, there was a reflection, there was a shine of humanity, there was a reflection of humanity in one of the guards, कि जब उन्हें उनकी लिमिट तक पुश किया जाता था, उनकी लिमिट तक टॉर्चर किया जाता था, तो कई बार ये देखा गया कि किसी गार्ड के हृदय में एक ह्यूमैनिटी, एक मानवता की भावना झलक गई और उसने ला करके उन्हें पानी पिला दिया या उसने ला करके चोरी छिपे उन्हें कुछ खिला दिया या ऐसी कोई भी चीज़. Perhaps just for a second, so it may be only for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. But that kind of a feeling of humanity was something that motivated Nelson Mandela, and it was something that kept him going. Means when he realized that even the Britishers, even these kind of guards who belong to the Britishers, if they can show the glimmer of humanity, definitely Nelson Mandela is going to get success in his motive of teaching love to everybody. कि जब उन्होंने ये देखा कि अगर इस तरीके के क्रूअल गार्ड्स के मन में भी थोड़ी सी उदारता आ सकती है तो मतलब कि ये एक मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है उनके लिए कि वो अपनी मुहिम को जारी रखें और लोगों को प्रेम सिखाने की कोशिश बरकरार रखें. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. So what he wants to say here, that man's goodness is a flame, that the idea of goodness in the human heart is that kind of a flame that can be hidden, that can be undercover, but it is never going to be extinguished, that it is never going to be blown out, कि ये कभी बुझ नहीं सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती है. इसको छिपाया जा सकता है, इसको धीमा किया जा सकता है, पर इसको खत्म नहीं किया जा सकता है.